IT person, my IT. See, now they have made me live, and I think now you can listen to me. क्या क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? आई थिंक आई वाज नॉट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू सो फार. अभी तक मैं आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी ना. नाउ it has come on YouTube, and now they will put me on Facebook as well. So uh, let me start from the beginning, because I had been talking and talking without getting any response from you all. uh, Hi and good evening. This is Parmita Dhar streaming live from Kolkata. And here I am with yet another edition of Soft Skills Spoken English Communication Development. And today we will be doing something which is very, very important for us to survive uh, in this competitive world. That is an attitude. That is an attitude, right? A positive attitude. Now, before I start with positive attitude, let me tell you a story. Let me let me tell you a story. I will start with a story, as I said. Now, let me see how many people have already joined in. I can see Priyanka, I can see Ruchika, I can see Mansi Chabra, Mamta, Anita. I'm good, Anita. Thank you so much. Kavita, Simu Gagandeep, Anita again. And then I have Sidhu Gummers, if I'm pronouncing the name well, and then I have Rajinder Kumar. Okay, so welcome to this edition, and let me tell you a story first, right? Now, this is a story of a farmer who had a horse, and the horse was wide enough to deal with goods and bads happening in life. So was the farmer, right? So once upon a time, there was a farmer and he had a horse. He loved his horse so much because the horse used to support the farmer's family. And the horse became the farmer's pride and joy because it used to help the farmer to earn money and run his family. But one day, the horse ran away. Suddenly, the farmer found that the horse ran away. The community heard about it. Some were happy, some were sad. Some genuinely felt about the farmer because they knew how much the farmer was dependent on the horse. They all came and kept on saying, "Oh my God, your favorite horse, whom you love so much, but it ran away. It is so bad." The farmer looks at them and he says, maybe. That was his answer, right? After 2 days, the horse comes back and along with him brings 4 wild horses. The community, the neighbors, the society of the farmer again gets very, very enthusiastic. Some positively, some negatively. And again, they come and meet the farmer and say, "Oh my God, we heard what happened. And now you have 5 horses. What a bit of good luck. That is so good." Some appreciated genuinely. Some appreciated with a bit of jealousy in their heart and in their mind. And the farmer looks back at them and says, maybe. On the next day, the farmer's son tries to train one of the wild horses because they thought that if they can train the wild horses, 5 horses together can help them earn a lot of money. While in the training, the horse kicked him off and he broke his leg into 3
pieces. The farmer's son broke his leg into 3 pieces. When this news spread in the neighborhood, again there was a kind of uh, communication, some positive, some negative. Some genuinely felt about the farmer's son. Some thought, oh, that's great. They were very happy with 5 horses and now they will feel the music, right? And again they come to the farmer's house and they said, oh my God, these are the stupid horses. Look what they did to your son. What will this young man do for the rest of his life? This is so bad. And the farmer says, maybe, like the previous 2 incidents. A few days later, when the boy was recovering from the accident, military comes to the farm looking for young men to draft to the army, to take them to the army. They give one look to the farmer's son and said, we can't draft him. He has got a broken leg. Everyone in the community congratulates the farmer that he had his son with him because the military came and took all the able gentlemen, young gentlemen of the village, of the farm with them to form an army, right? And again, the community people, they come to the farmer's house and says, oh my God, you have your son. Our sons got drafted. You are so lucky. That is so good. And the wise farmer still replies in the same way, maybe. So what is the moral of the story? The moral of the story is that it is so easy to develop negative mindsets when something bad happens to us. But good or bad, who knows? Only time can say. Apparently, what seems good might not be good at the long run. Apparently, what seems bad might not be bad in the long run. It depends upon the situation. How we react to the situation is our attitude. In this particular story, we have seen the farmer's attitude. He was always very calm and composed. When he had only one horse which ran away from his farm, he did not cry, he did not curse his luck, he did not make any scene out of it. He waited. When the horse came back with 4 wild horses, he wasn't overjoyed. He waited. When his son went to train the wild horses, he wasn't very disturbed or very enthusiastic or very happy or very hopeful. He waited. When his son broke his leg while training the horse, and people came and tried to sympathize with him, he again kept his calm. When the military came, then only he came to know that whatever has happened for good. And then also, he did not do anything. He did not do anything in joy or in happiness or in a lot of enthusiasm, right? But he waited, and that is what we called an attitude. You will see people will say negative attitude, positive attitude. I really do not know which one is what, but what I can tell you that attitude depends upon a lot of things. Attitude depends upon a lot of things.
So, did you like the story that I shared with you? First, tell me that, and then I will go to today's topic, that is attitude, positive attitude. So, we can see Dolly joining in, Lakwinder, Varsha, Muskan, Parav, Sukhpreet Verma. Sukhpreet, good to see you. Modan Singh, Pavan Jingle. Hello, hello to all of you. So tell me, my dear friends and others, please tell me how Monu Verma. Acha, uh, how was the story? Could you relate to the story? A negative mind never gives you a positive life. Muskan, that's the greatest philosophy of life. Thank you for understanding it so early. Now, as I was telling you about attitude, can anybody tell me what is exactly the Hindi of attitude? What exactly do we mean attitude in Hindi? Is it ravaiya? कोई बात नहीं Monu, no problem, no problem. It's absolutely fine. Sushil Kumar is saying, I'm Anita. Yes, I do remember now. Sushil Kumar ji, you are Anita. I remember that. Right? So, attitude क्या होता है? What is attitude? What is attitude? क्या आप मुझे बता सकते हैं? An attitude is a positive, a negative, or a mixed evaluation of an object expressed at some level of intensity. It is an expression of favorable or unfavorable evaluation of a place, person, thing, or event. Right? So, attitude is what? Attitude is our nature to see a certain thing. For example, for example, right? Now that the pandemic is going on, right? We are all our point of view about a particular situation. Absolutely, absolutely. Our perception about a particular situation. Exactly, I agree with you. ये क्या लिखा आपने नजरिया राइट attitude depends on the person, so two-way negative and positive, yes, of course. Now that the pandemic has started since March 2020, if I'm not wrong, right, end of the March, the lockdown started. uh, there was a time when people started, I mean, the blessed one, when we don't have to think about what we will eat tomorrow. So we started the lockdown in a very positive mode, thinking that with the lockdown, we will have a good family time. People started making dalgona coffee and putting it on Facebook and Instagram. Lifetime, ये कौन है Lifetime जी? नमस्ते. uh, भगाराज एम राठौर, हाँ हाँ नमस्ते, बाड़मेर से आप आते हैं, आई नो. सदवीर, हाय सदवीर. Right, so we started making, people started making dalgona coffee, Lalit Kumar, hello, and putting it on Facebook. लोगों ने बहुत सारा रेसिपी ट्राई किया, सारा कुछ फेसबुक में डाला, ये किया वो किया, and everything was sorted. उसके बाद धीरे धीरे आया a kind of अकेलापन. कहाँ तक आप घर पे, संदीप भाटिया, हाय संदीप, कहाँ तक आप घर पे रह सकते हो? People started feeling frustrated. Screen time increased. Screen time means, what do we mean by screen time? Now that I'm taking this session with you, I'm sharing a screen time. You are also in front of the screen. The entire day we are with our mobile phones, we are with our laptops and everything, right? We started feeling bad about it. Some people started feeling physically unwell. Some started feeling mentally unwell, right? And some in this process, some started upskilling themselves, some started
upskilling themselves. They actually searched about a lot of mm, mm, courses on the net, and they started to do those courses, learn new things. New things could be anything, right from baking a cake to data analysis to something else, and started keeping themselves engaged. And there are some people who started feeling very lonely, very sad, and in the process they became so desperate, they started going out in the pandemic itself, posing a threat to themselves, to their family members, to people around, to the society. So whatever we are doing, the reaction to a particular situation, the situation is same for everyone. It is pandemic, we are housebound, we are homebound. सब घर पे कैद है, बैठे हैं, कहीं आना जाना नहीं है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, कॉलेज स्कूल का तो हो गया, पता नहीं कब खुलेगा, right? Right? So in that particular situation, what is the how I react to that situation? That is attitude. है कि नहीं बोलो? Do you agree with me? Yes. हम लोग टीवी पे देखे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, द मेडिकल स्टाफ who are working day and night. अभी तो थोड़ा कम हुआ है उनका प्रेशर शायद, लेकिन जब सेकेंड वेव था, फर्स्ट वेव था, how they used to keep themselves entertained. कोई वॉट पे डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, because it was so negative all the while, taking care of patients, deaths, everything. So they were not only entertaining themselves, they were also motivating the patients. Some were doing this, right? There were many medical staff who could not survive the situation. It is all how you see to it. It is all how you see to it. So attitude is a perception. Attitude is a perception, right? I will Vikas Kumar क्या बोल रहा है? Good evening, ma'am. How are you? I'm great, Vikas Kumar. Thank you so much. 1 तारीख का बोल रहे हैं ना, ये क्या बोल रही हो तुम प्रियंका? Is it something related to me, or you are talking amongst yourself? I do not know. अच्छा, तो how I react to a particular situation, right? आज अचानक क्लास लेते लेते अगर मेरा लैपटॉप खराब हो जाए तो क्या होगा? ये बोलिए आप लोग। आज अचानक सेशन चलते चलते अगर मेरा लैपटॉप खराब हो जाए तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए तब? कुछ दिन पहले ये हुआ था, कुछ दिन पहले ये हुआ था। What should I do? What should I do? Tell me. Tell me. Tell me, what should I do? You should have some alternative. अच्छा, कॉलेज ओपन हो गया है 1 तारीख को, क्लास स्टॉप हो जाएगी, एब्सोल्युटली। जूम या गूगल मीट पर क्लास कर लेना जी, वर्चुअल हग, ओह बाबा। No, I mean, I agree to all of you. We should have an alternative. I agree with Vikas Kumar. I agree with Monu Verma. लेकिन यहाँ पे जो जिस पे हम लोग क्लास करते हैं, just called something called StreamYard, ऐसा ही कुछ है, right? I can feel very bad about the situation कि मेरा एक सेशन था, मैंने मॉर्निंग से प्रिपेयर किया था, अच्छा नहीं लग रहा है, I might feel irritated, I might feel bad. At the same time, I might feel चलो ठीक है, मैं तो रोज ही सेशन ले रही हूँ, एक दिन नहीं हुआ तो क्या किया जा सकता है, let us accept
लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट कि आज नहीं हो रहा है, राइट? तीसरा मैं क्या कर सकती हूँ, आप ट्राई करेंगे कि किसी भी तरह से क्लास स्टार्ट हो जाए, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइट, एब्सोल्युटली। या फिर मैं सोचूंगी कि चलो आज क्लास नहीं हो रहा है, यस आई विल फील वेरी बैड, एब्सोल्युटली। आज क्लास नहीं हो रहा है तो आज का ये टाइम मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ कल के क्लास के लिए सेशन रेडी करने के लिए। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। आज अचानक आप रात को व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, अचानक आपका मोबाइल खराब हो जाता है, अचानक आपका मोबाइल खराब हो जाता है, राइट? तो तो what will you do? You will run to your father and say कि पापा मुझे फिर से एक नया मोबाइल खरीद के दीजिए जिसका दाम किस इज समथिंग बिटवीन 10 to 15,000। क्या आप सब यही करोगे? टेल मी, you will run to your father and nag to him about a new mobile, or to your mother, Dolly is saying no. Dolly is very sensitive, she's saying no. आई विल ऑल्सो फील बैड। अगर अचानक से मेरा ये मोबाइल जो है ना, ये मेरी जिंदगी है, अभी बन गई है पैंडेमिक में, अगर अचानक से ये खराब हो जाए तो आई कैन नॉट रन टू माई फादर बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड, बट आई विल फील बैड। बट एट द सेम टाइम but at the same time I will not feel so bad that I get into sadness, I get into a kind of uh, down attitude. What I will do, I will use that time to watch a little bit of TV, to eat, to read a newspaper, to read a book. You should not, Dolly, very good. To read a new book, to cook a new dish for the family, spend some quality time with the family. नहीं तो हमारा मोबाइल जब हाथ में आ जाता है, what do? We do not spend any quality time with our family. है ना? So that is attitude. How do we see a particular situation? Right? Now let me share my PPT with you. Yes. I think it is showing, isn't it? So it is said that attitude is everything. यानी कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे किसी चीज को देखने का तरीका, हमारे किसी चीज को समझने का तरीका, जिसको हम लोग इन अ नटशेल एटीट्यूड बोलते हैं, वो ही सब कुछ है जिंदगी में, राइट? जो ऊपर से हम लोगों को जो दिखता है, इट इज लाइक एन आइसबर्ग। हाउ मच डू यू सी ऑफ एन आइसबर्ग? आइसबर्ग को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को अगर मालूम है तो थोड़ा सा गूगल करके आप देख सकते हैं। आइसबर्ग, we get icebergs in the oceans. We only see the tip of the iceberg. We do not see what is deep inside the water. We do not see what is deep inside the water. Only 10%, I'm so sorry, only 10% of the iceberg is visible. Remaining 90% is below the sea level. Our attitude is also like that. Our attitude is also like that. Okay. How? Let me tell you. What people see in us, is called our outer
self, right? What people do not see in us is our inner self. तो मैं शायद आपको ये बताऊं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो आप नहीं दिख रहे हैं. So attitude is just like that. Attitude is just like that, right? The iceberg phenomena is also applicable in human beings. The iceberg phenomena is also applicable in human beings. The 10% of the iceberg which we see, the 10% of the iceberg which we see is knowledge and skills. And the 90%, how we present that knowledge, how we utilize that skill, how we show that to others, depends upon our attitude, which is not seen by people. Which is not seen by people. Right? So attitude contains what? Consists of what? It consists of values, standards, judgments, motives, ethics, beliefs, everything. Everything. Right? I'll just stop sharing this for a while and I'll come to you. विपुल गोहरेला, समझ में नहीं आ रहा है मैम. अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताना. हाँ, हाँ, I am talking about attitude, right? सिमू गगनदीप, क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा है? आप थोड़ा सा मुझे बताइए. विपुल को समझ में नहीं आ रहा है. विपुल, मैं क्या बोल रही थी? I'm sorry for the broken Hindi that I'm using, because this is something which is difficult to translate in Hindi for me. मेरे लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने के लिए कि एटीट्यूड, रवैया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, राइट? तो किसी भी सिचुएशन को जब हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग ऊपर से देखते हैं, राइट? और इस पे बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है. सबसे पहले हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, हमारा अपब्रिंगिंग, हम किस माहौल में पले बड़े हैं, किस माहौल में रहते हैं, कैसे हमारा सोचने का तरीका है, everything depends on that. Okay, so how much we like or dislike something determines our behavior towards that thing. So we tend to approach, seek out, or to be associated with things we like. We don't like to be associated with things which we do not like. Say, for example, I give you a very simple example. The subject which we do not like to study. For many people, mathematics is a subject which they do not like to study. डरते हैं सब उनसे. मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है. आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ मैथ्स. मेरे से नहीं होगा. एंड इन द प्रोसेस व्हाट वी डू, राजेंद्र कुमार नमस्ते. इन द प्रोसेस व्हाट वी डू, वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट. हिंदी मुझे बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश मुझे बहुत अच्छा आता है. I become more inclined towards the subject. So my attitude towards English or towards Hindi or towards maths, if I like it, is more positive. My attitude towards maths or physics or any other subject, economics or English or whatever, for some people English, they move away from the subject. That is a negative attitude. Or I will not say it's a negative attitude, rather it is a wrong attitude. There's nothing called positive or negative. It's called the right attitude or the wrong attitude. है ना? बहुत गुस्सा आता है किसी के ऊपर, उसको मार ही देते हैं. Is that a right attitude? Do you consider that to be a right attitude? हाँ, बहुत गुस्सा आता है. Do you consider that to be a right attitude?
I don't consider it to be a right attitude. इसके बाद एटीट्यूड के बाद आई विल डू विथ यू इमोशनल इंटेलिजेंस नेक्स्ट वीक. तब आपको पता चलेगा. दोनों को ना लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग अभी बड़े हो गए हो, कॉलेज जाने लगे हो या फिर हाई स्कूल में हो, तो दोनों को लिंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यस, नो, सो एवरीबडी इज सेइंग नो. मुस्कान, सिमू, अनीता सारे लोग बोल रहे हैं, मनु सारे लोग बोल रहे हैं इट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड. तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड? हमार इफ्तिकार, हेलो, अमृतमान, हेलो. हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड? अगर सबको ये पता होता तो हम लोग तो इतना लड़ाई नहीं करते, बीच रास्ते पे मार पीट हंगा दंगा ये सब तो नहीं करते हैं. बिकॉज मन ही मन हमें लगता है कि वही राइट एटीट्यूड है. तुमने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी तुमको 2 लगा के उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी. आराम. चलो, मुझे जो करना था मैंने कर दिया. आई एम फीलिंग सो हैप्पी नाउ. Is that a right attitude? I do not know. I am here not to teach you what is a right attitude or what is a wrong attitude. I am here to tell you. मैं सिर्फ आपको ये समझाने आई हूँ कि क्या क्या हो सकता है. We are all grown up. आप लोग सारे grown up हो. आपको तय करना है कि आप कौन सा लेंगे. Because मैं अपने तरीके से सोचती हूँ, आप अपने तरीके से सोचेंगे. आप अपने तरीके से सोचेंगे. द स्टोरी ऑफ कैब ड्राइवर. मैम, कौन सा कैब ड्राइवर बेटा? राइट, राइट. तो मैं व्हाट आई कैन टेल यू इज आई कैन जस्ट टेल यू द डिफरेंट सिचुएशन. उस सिचुएशन में आप कैसे उसको यूज करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे. अच्छा अमृतमान, मैं तो कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश तो इंग्लिश में ही करना होगा ना. तो आप उस पे कैसे रिएक्ट करोगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके किस चीज के ऊपर. वो जो 90% का आइसबर्ग जो पानी के अंदर था, पानी के बाहर वो आपका रिएक्शन है. पानी के अंदर जो है वो आपका, आप असल में क्या हो, आपके अंदर में क्या हो क्या होता है. Right? Yes, Iftikhar, I can now understand. Right. Now let me give you a situation, a lighter situation. Right? ज्यादा भारी भरकम सिचुएशन देने से सेशन थोड़ा सा भारी हो जाता है. I don't want you people to have a very tough session. Suppose एक रात को आप लोग सोते हो, मैं भी सोती हूँ. Right? नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं देखती हूँ मेरे सारे बाल झड़ गए हैं. आई बिकम अ बॉल्ड एंड आई okay, so Simu and Gagandeep have some quick fix remedy. Okay, never mind. Right? So आप मॉर्निंग में उठ के देखते हो, सोचो, हाँ ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. आप मॉर्निंग में उठ के देखते हैं आपके सारे बाल झड़ गए हैं, बस 3 बाल है आपके सर पे. यू आर लेफ्ट विथ ओनली 3 strands of hair, right? So how are you going to react to it? Let me understand your attitude now. Tell me. इंस्टेंट रिएक्शन आपका क्या होगा? इंस्टेंट रिएक्शन आपका क्या होगा बताइए. ये क्या है मैम? ये एक सिचुएशन है. नो मैम, ओके, सिमू इज सेइंग नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ. भगवान मुझे छोड़ के किसी के साथ भी कर दो. एब्सोल्युटली, दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट रिएक्शन. ये शॉकिंग कविता. एब्सोल्युटली सोच भी नहीं सकते. मैं भी नहीं सोच सकती रे, सच में बोलती हूँ, मुझे भी नहीं सोचना ऐसा. ये एल्बो कफ क्या है? मोनू तुम क्या लिखते हो? मुझे नहीं समझ में आता है. वेरी शॉकिंग. एब्सोल्युटली.
तो द फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू डू? शॉकिंग तो है, शॉक तो लग गया, करंट का शॉक लग गया हम लोगों को। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? प्रियंका को देखो क्या हाल है इसकी। अभी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप? मैं बोलूंगी मैं क्या करूंगी अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो, लेकिन मुझे आपका सुनना है पहले। मुझे आपका सुनना है। हाँ, सपना ही तो है, लेकिन सपना अगर सच हो जाए रोने लग जाएंगे। नहीं, यू हैव टू टेक एन एक्शन, यू हैव टू टेक एन एक्शन। रोना धोना तो होता रहेगा, जिंदगी भर रोएंगे। कल अगर मेरे एक भी बाल नहीं रहे, मैं सिर्फ एक दिन नहीं, जितना दिन जीऊंगी उतना दिन रोऊंगी। फाइंड आउट द रीजन। अच्छा चलो, I agree with Kavita. She will find out the reason. Handle this situation, absolutely. But how? How? That is the question. Surprise other family members with my new look. Oh, I love this. Thank you, Iftikhar. तो बहुत मतलब यूनिक एटीट्यूड है, जबरदस्त है। आई अप्रिशिएट दिस, आई अप्रिशिएट दिस। सपने कभी सच नहीं होते, थैंक गॉड, थैंक गॉड, सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन कैसे इस हैंडल सिचुएशन को हैंडल करेंगे? फर्स्ट आई विल टेल माय मॉम, ओके, इफ्तिकार बोल रहा है कि सबको सरप्राइज देंगे, ज़ॉम्बी की तरह जाके ऐसे सबको डरा देंगे या हंसा देंगे, कुछ भी करेंगे, राइट? राइट। मैं सबसे पहले जस्ट डायल में जाके, टेलीफोन डायरेक्टरी में जाके ढूंढूंगी कहाँ पे अच्छा विग मिलता है, क्योंकि मुझे तो निकलना है शाम के 5 बजे, आप लोगों के साथ बैठना है सेशन के लिए, है ना? अगर मेरे एक भी बाल नहीं रहे तो आप लोगों को क्या लगेगा कि ये कौन आ गई है? अरे ये तो मैम का क्लास नहीं है, ये तो मैम का क्लास नहीं है, ये किसी और का क्लास है। नहीं, इस सेशन में हम लोग को नहीं आना है ना? तो a solution, finding a solution is very very important, is very important, isn't it? So that is why we have to we have to think in a more constructive manner. Firstly, true, this is true and accept. Now, let me say a silent prayer कि ये सपना सपना ही रहे, कभी सच नहीं हो। सो एटीट्यूड ऐसे समझा जाता है, एटीट्यूड ऐसे समझा जाता है। कोई लोग होंगे जो रो 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 के एकदम हालत खराब कर देंगे, कोई लोग होंगे जो वो 3 बार कैसे रहेंगे मुझे नहीं मालूम, तुम सोचो और मुझे नेक्स्ट डे सेशन में बताना क्या सोचा तुमने, ठीक है? तो दैट इज हाउ एटीट्यूड इज ऑल अबाउट। देखो, मैं तुमको बहुत सारा एटीट्यूड का थ्योरी पढ़ा सकती हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी और तुम जाके भूल जाओगे। लेकिन 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 if you learn it in this way, if you learn it in this way, you will remember it forever, for the rest of your life, for the rest of your life, right? फिर से थोड़ा सा शेयर करते हैं हमारा पीपीटी। Let me see. Yeah. Now you see, there's a very interesting thing, right? यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को? from our childhood it is told to us that we have to be knowledgeable, we have to work hard, we have to uh, have a lot of skills, right? और यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस दिया गया है, और देखिए यहाँ पे क्या आता है। दो इट इज नॉट अ वेरी साइंटिफिकली प्रूव थिंग, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सबको बताने के लिए। मेरा एक्सप्लेनेशन इजी हो जाता है to make people understand that the importance of right attitude in our life. What is the importance of right attitude in our life? देखिए, to be successful in life,
इन आवर पर्सनल लाइफ एंड इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, चार चीजों की जरूरत होता है. वन इज स्किल, one is knowledge. Okay, first is knowledge. Knowledge यानी ज्ञान. Skill is the implementation of the knowledge. मैंने सीखा है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह में इंग्लिश लैंग्वेज सीखा है. मेरे पास डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स है. नाउ द स्किल, हाउ आई यूटिलाइज दिस नॉलेज टू टीच अदर्स, दैट इज स्किल, राइट. मुझे एग्रीकल्चर, मैंने एग्रीकल्चर में एमएससी किया है फ्रॉम एसकेटी यूनिवर्सिटी. आई हैव द नॉलेज. हाउ आई इंप्लीमेंट दिस when I start working, the knowledge that I have, that is my skill. Hard work is very important. Without hard work, we cannot do anything, right? And then comes the last one, which is attitude, is like how we do it. These are the things what we do and what we have. Then comes how we do it, that is attitude. अभी आप देखिए यहाँ पे A to Z सारे अल्फाबेट्स को 1 2 3 4 5 6 करके 26 तक, because there are 26 alphabets in English alphabet, 26 तक इसका नंबरिंग किया गया है. So if I take S in skills, which is 19th, then K, which is 11, then I, which is 9, then L, which is 12 plus 12, and then again S, 19, the total figure comes to 82. In the same way, when we do, the total figure comes to 96. With knowledge, hard work is 98. But if you say attitude, A is 1, double T is 20 plus 20, I is 9, again T is 20, U is 21, D is 4, and E is 5. And what do we have? We have a perfect 100. Though this is a coincidence, but this is how it is. This is how it is. So from this simple, funny thing, we understand the importance of attitude. Now, let me write something from you. कहाँ लिखूं मैं? Right? This is something which I have written for you. Isn't it? इसको मैं एकदम लाल कर देती हूँ. Impossible, right? People say that impossible यानी नामुमकिन. नामुमकिन इस impossible में ही है. इसको अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग को इस पे थोड़ा सा ऐड कर दे, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचे, तो ये क्या है? ये क्या है? It becomes what? It becomes I am possible. I am possible. So impossible को जो लोग I am possible करके देखते हैं, उन्हीं का एटीट्यूड सबसे अच्छा होता है. Right? You can do everything, but not. We have to understand a certain thing. अच्छा, थोड़ा सा मैं शेयरिंग बंद करती हूँ. Right. अच्छा, अमृतमान ने लिखा आपा खुशालाश में भी पढ़ते हैं. ये समझ में नहीं आया अमृतमान, आपने क्या लिखा? थोड़ा सा आप मुझे बताइए. हाँ, अभी मैं क्या बोल रही थी? You are right. So it depends on how we take things. It depends on how we take things, right? Say for example, for some people, just a sec. It is impossible. For some people, it is I am possible. कैसे आप चीजों को देखते हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर.
कैसे आप चीजों को देखते हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट? एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Yes, yes, Manu, absolutely. Is it showing? Stop sharing. Let me try once again. Is it showing? It will. It will. Give me some time. Give it some time. Yes. So what is Monu saying? Monu is saying that nothing is possible. Yes, ma'am, I'm possible. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yeah, I know it's not showing. I know it's not showing. I'm trying to do that. I am trying to do that. पता नहीं, दे के रखा है, देखते हैं अगर हाँ, नाउ इट इज शो, राइट। कैन यू सी इट नाउ? Can you see it now? Yeah. So there's a picture of a glass in this, which is half filled and half empty. So this half full is a wrong English. Half filled or half empty, right? How you see to it? आप इसको कैसे देखते हैं? How you see to it depends upon what? Depends upon your attitude. Depends upon your attitude. So I call it is full, filled, or full empty. When I say full filled, what I mean by that? Half is, I'm sorry, when I say it is full filled, what I mean by that, half is filled with some water, with some liquid, which is blue in color, shayad pani hi hoga. And the rest half is filled with opportunity. I can add some more to it, right? ठंडा बर्फ का पानी है तो मैं उस पर थोड़ा गर्म पानी मिला सकती हूँ, राइट? गर्म पानी है, मैं उस पर थोड़ा ठंडा पानी मिला सकती हूँ। चाय है, मैं उस पर थोड़ा चीनी मिला सकती हूँ, है ना? So half is filled with a liquid and half is filled with opportunity, right? Or half is filled with a liquid and the half is filled with air. Somebody also say that. But at the same time, some people will say that half is empty. इतना ही तो दिया है, पूरा तो भर के नहीं दिया, एक ग्लास में थोड़ा सा कुछ पीने दिया, वो भी आधा खाली था। ऐसा भी होता है हम लोग का एटीट्यूड. दैट इज ऑल्सो आवर एटीट्यूड, isn't it? Isn't it? So what is our attitude depends upon our perception. You can do everything, you have to understand, but not all at once. I'll come to this in the next session on attitude, because I think I will have to take another session on attitude today. We will not be able to finish it otherwise, right? Half full, opportunity to add some more thing. Absolutely. Himanshi, hello. Gagandeep, sorry क्यों बोल रहे हो तुम बेटा? Late. Okay. No problem. No problem. Right? So this is very important. So what is attitude? What is our learning from this session? That attitude is a manner. It is a disposition, feeling, right? It is a position about a person or a thing or a tendency, orientation, especially in mind. I just give you an example. An example from real life. पता नहीं आपके शहर में कैसा है, मेरे शहर में जहां पे मैं रहती हूं बहुत सारे ओल्ड एज होम्स है, स्पेशली इन द एरिया वेयर आई लिव, बिकॉज आई लिव इन एन एरिया विच इज वेरी लेस पॉपुलेटेड, बहुत ग्रीन है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे गली में, रास्ते में
आते जाते मुझे दिख जाते हैं ओल्ड एज होम। क्या आप लोगों ने कभी ओल्ड एज होम देखा है? हैव यू एवर सीन एन ओल्ड एज होम? Yes, it depends on our point of view that how we take things. Now let me come to my example. Himanshi and all, please respond. Have you ever seen an old age home? या फिर सुना है old age home? We have a concept. We have a concept that old age home में वही लोग रहते हैं जिनको अपने घर वाले नहीं रखना चाहते हैं, है ना? क्या आपका भी यही कॉन्सेप्ट है? क्या आपका भी यही कॉन्सेप्ट है कि ओल्ड एज होम में वही लोग रहते हैं जिनको अपने बच्चे बड़े हो जाने के बाद बूढ़े माँ बाप को अपने घर पे या बूढ़े दादा दादी को अपने घर पे नहीं रखना चाहते हैं? डू यू ऑल्सो थिंक इन द सेम वे? प्लीज टेल मी, हरी अप। Right? We all have this concept. We all have this concept. नो मैम? अच्छा, नो मैम मतलब किस आंसर का नो मैम? ओल्ड एज होम नहीं देखा या ओल्ड एज होम के कॉन्सेप्ट के बारे में आप मुझे नो मैम बोल रहे हैं? किस बारे में? So Himanshi is saying that she had been to an old age home on her birthday and celebrated with them. That's fantastic, Himanshi. That's fantastic, Himanshi. Right? But क्या आपको लगता है I have seen old age home? अच्छा, लेकिन क्या आप भी ये विश्वास करते हैं कि वहां पे वही लोग रहते हैं जिन लोगों के बच्चे उन्हें नहीं देखते हैं? पीपल हु डू नॉट टेक केयर, द चिल्ड्रन हु डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड send them to old age home. Do you also believe in that? I think I'm audible. मैंने वो हेडफोन थोड़ा खोल के रखा है. It's very hot here, that's why. You know, there are people who go to old age home very happily, very happily. Why? Because there they get people of this age. आराम से पिकनिक मनाते हुए रहते हैं वहां पे, पिकनिक मनाते हुए रहते हैं वहां पे, साथ में कैरम खेलते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट खाते हैं, साथ में मॉर्निंग वॉक करते हैं. And I think that is also quite a positive attitude of seeing life. Quite a positive attitude of seeing life. Right? घर पे अकेले सारा दिन जब बच्चे काम पे जा रहे हो, yes, they get friends, right? बच्चे काम पे जा रहे हो, शाम मॉर्निंग के 9 बजे से रात के 9 बजे तक अकेले रहने से तो अच्छा है मैं जिनके साथ खुश हूँ, मेरे उम्र के लोग, उनके साथ रहो. But I'm not saying what I say is the right thing. There are people जो लोग अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाते हैं, कभी देखने भी नहीं जाते हैं, ऐसे भी है, राइट? लेकिन ये है एटीट्यूड, कैसे हम लोग चीजों को देखेंगे. लेकिन ये एटीट्यूड कैसे ही हो जाता है? मैम ने कहा है कि ओल्ड एज होम बहुत अच्छा है तो ओल्ड एज होम अच्छा हो गया. नहीं, ये एटीट्यूड डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में कोई दादा दादी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं. क्या वो अपने मर्जी से रह रहे हैं या फिर वो रह रहे हैं क्योंकि किसी ने उनको जबरदस्ती वहां पे डाल दिया है, राइट? सो ये सारा कुछ है, डिपेंड करता है अपने सिचुएशन के ऊपर. एटीट्यूड डिपेंड करता है अपने सिचुएशन के ऊपर. किसी बच्चे ने अगर हमेशा से अपने घर पे ये देखा है कि दिन रात झगड़ा होता है, मम्मी पापा लड़ते हैं, दादा दादी लड़ते हैं, भाई बहन लड़ते हैं, तो उसको वही नेचुरल लगेगा. He or she will think that to be natural. Everything has two faces. Absolutely. I like this maturity among you people, right? So, तो वो उनको नेचुरल लगता है. जिसने वो नहीं देखा कभी, जो बहुत शांत परिवेश से आता है, वो अगर ऐसे सिचुएशन में मतलब आ जाए कभी भी, तो वो बहुत डर जाएगा. He or she will have a lot of problem on that situation. न्यूक्लियर फैमिली से कोई अगर जॉइंट फैमिली में जाता है,
he or she will have a lot of problem. He or she will have a lot of problem. So it all depends upon our environment, upon our upbringing, और उसके साथ साथ our education, our learning, our exposure to the outer world. हम लोग जितने लोगों के साथ मिलेंगे, जितने लोगों के साथ बात करेंगे, उतना उतना हमारा एटीट्यूड राइट होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा. अगर हम लोग को एकदम एक ही छोटे से जगह में बैठे रहे, आई एम नॉट सेइंग फिजिकली यू हैव टू गो, बट यू हैव टू ओपन योर माइंड, isn't it? You have to open your mind, use the internet medium, right? Use the internet medium, see places, read about new cultures, new things, new food habits, new lifestyle, and then only you will come to know about various ways of dealing one particular situation. Otherwise we will only learn what we have seen. Experiential learning, जो हम लोगों ने experience किया है, देखा है, right? We also need to learn which we have not seen. हम लोग पिज्जा खाते हैं ना, pizza is not our food. How did we come to know? From the marketing of pizza things, pizza companies, isn't it? So we were exposed to that culture, to that Italian food, or to the Chinese food, or the Mughlai food, whatever. नहीं तो हमारा जो food है, दाल चावल रोटी सब्जी. My Bengali food includes a lot of fish, but beyond that there is life, right? तो उस वो experience करने से what happens? वो experience करने से what happens? Our attitude towards a certain thing change, right? So this is all about attitude I have to tell you today. Tomorrow we will do a vocabulary game, and Monday again I will do a little bit of attitude, and then we will go to one very important thing of our life, that is emotional balance, emotional quotient. ठीक है? और मैंने आपको आज एक होमवर्क दिया था, आपने किया कि ग्रामर से, इंग्लिश लैंग्वेज से आप लोगों को कौन कौन से एरियाज में सेशंस चाहिए मुझे बताने के लिए. वेल डन मैम, ओ थैंक यू, थैंक यू. तो आपने नहीं बताया वो मुझे, चलिए कल बताइएगा, ठीक है? टेल दिस टू मी टुमारो. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टुमारो इज संडे. नो, टुमारो इज सैटरडे. डॉली यादव, टुमारो इज सैटरडे. तुम एक दिन आगे चल रही हो. ओके, चलो ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. I will be seeing you tomorrow again on this Facebook live page of SKD University. Till then, you take care and learn a little bit of English. Bye-bye.